Assalamu alaikum, my name is Khalid. I'm a chef, I'm an entrepreneur and an international culinary consultant. And I'm here at Talks today. Other than all these things, what I enjoy most is blogging by the name of the Butterfingers. I just started off मजाक से enjoy करते हुए, खाने की posts करते हुए, recipes लगाते हुए, and it just grew so much and I started enjoying it so much more. Followers बढ़ते गए, मेरा interest बढ़ता गया, लोगों को सिखाती रही और now this is where we are today. फिर बीच में आ गया COVID and सब कुछ बंद हो गया. I used to work between Dubai and Pakistan before that, mostly based in Dubai. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के साथ कंसल्टेंसी करती थी, फूड एंड बेवरेज ब्रांड्स के साथ कंसल्टेंसी करती थी, उनकी मार्केटिंग करती थी, उनके लिए रेसिपीज़ क्यूरेट करती थी. एंड जब कोविड आया तो सारा काम बंद हो गया. सो उसमें से दो चीज़ें मैंने स्टार्ट की. द फर्स्ट वन वाज स्टार्टिंग माय ओन ग्रेजिंग प्लेटर्स, जिसमें हमने जाइगेंटिक प्लेटर्स बनाने शुरू किए. और क्योंकि जैसे बाहर कॉन्सेप्ट होता है चीज़ बोर्ड्स का एंड चीज़ प्लेटर्स का, एंड दैट वाज नॉट समथिंग आई फेल्ट कि पाकिस्तानीज़ इन्जॉय करेंगे, तो उस आइडिया को थोड़ा सा चेंज किया और उसको कन्वर्ट किया इनटू मोर अ डिप्स बेस्ड प्लेटर, जो आप मैं हम सारे इकट्ठे मिल के विद फैमिली विद फ्रेंड्स इन्जॉय कर सकें. एंड कोविड था, लोग बाहर नहीं जा रहे थे, डरते थे, एंड द आइडिया जस्ट पिक्ड अप, इट्स स्काई रॉकेटेड all like overnight. We had a lot of people come in the same line of work, which is great because, you know, competition always makes everybody perform better, and customers also get better products like that and better value for money. So बस काम बढ़ता गया और कोविड में बैठे बैठाए नए आइडियाज़ आते गए और टेबल्स भी हमने स्टार्ट कर दी, लाइक प्लेटर्स. वी ऑल्सो स्टार्ट डूइंग फुल ऑन ग्रेजिंग टेबल्स, जो इवेंचुअली लोगों ने अपनी शादियों में भी करवानी शुरू कर दी, बड़ी पार्टीज़ पे, ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ पे एंड द लाइक. सो इट बिकेम लाइक अ वेरी इन थिंग इन लाहौर एंड नियर बाय जो भी सिटीज़ हैं, सियालकोट है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, and we started doing all the caterings for them as well, and people really enjoyed this different kind of finger food, cold food, और आई गेस पाकिस्तान में खाने से ज़्यादा तो और किसी चीज़ को इन्जॉय करते नहीं है, तो उसको खूब इन्जॉय किया लोगों ने, और मैंने बनाने में और लोगों ने खाने में. सो द सेकेंड थिंग दैट हैपेंड इन कोविड, लॉकडाउन के बीच में, वाज कि मैंने एक बहुत ही सुपर एक्सपेंसिव इटालियन अवन ख़रीदा. एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक कि ये क्यों ख़रीदा तुमने, इतना महंगा है और इसमें इतनी क्या साइंस है. एंड आई, बिकॉज ही डज़ नॉट कम फ्रॉम अ culinary बैकग्राउंड, तो मैंने कहा कि यू नो आपको नहीं पता, ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है. एंड बस बिकॉज कोविड था, लॉकडाउन था, ही वॉज ऑल्सो एट होम, ही टोल्ड मी कि अच्छा वी आर गोना ओपन दिस अप, इसको हम डाइसेक्ट करेंगे, ये तो हम खुद बना लेंगे. And obviously, because it was an expensive product, I didn't want him to do that. I didn't believe that we could do it ourselves because Italy से आती हैं ये सारी चीज़ें, Italian style pizza ovens हैं. So मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थी, but my husband said, oh ये हम बना सकते हैं. So I said ठीक है, जब बनेगा ना फिर हम देखेंगे. So a month later, he brought me from his factory. So he has a factory that also deals with metals and different kinds of materials, जिनकी वजह से he could try and replicate whatever was happening. So our engineers sat down together. They, you know, curated the whole map of how the entire, you know, an Italian style pizza oven could be made in Pakistan, but much cheaper. तो अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया था, एंड सो दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड माशाल्लाह वी हैव सो मच टैलेंट इन पाकिस्तान कि हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं इन चीज़ों को कि ये तो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता. लाइक मैंने किया खुद, सबसे पहले तो सेल्फ डाउट एंड ऑल्सो डाउटिंग कि ये इटालियन प्रोडक्ट्स हम कैसे बना सकते हैं. So mashallah, our labor is super skilled, and our engineers are super, you know, they're great at what they do. So together as a team, R&D इन्होंने की, इन्होंने पहला प्रोटोटाइप मुझे exactly I think 1 month and 10 days में दिया था, and मुझे लगा था ये मजाक है, but it actually did work. It was not the best, but it worked.
And from there, and because I was on the testing side of the products and I knew कि मुझे क्या temperatures चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, इस product को मैंने किस तरह से यूज़ करना है, इसमें इंसुलेशन कैसी होनी चाहिए, इसकी हीट कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इसके गेज कैसे होने चाहिए, मेरे लिए यूज़ ऑफ इक्विपमेंट क्या होगा और इजी कैसे होगा, क्या चीज़ सही नहीं हो रही, क्या ठीक हो रही है. So, you know, that became like a great team between my husband and myself because he's on the more brainier side of making these products और मैं testing side पे हूँ. So, यहाँ से हमने अपना काम शुरू किया of outdoor kitchen appliances which started with wood-fired oven and then we made जो pizzas के लिए use करते हैं Italian style. And then we made a multi-fuel oven which can be run on wood as well as gas. And then eventually we were able to make the first brick oven. And bus brick ovens, you know, maximum I think jitne mashallah se restaurants hain Lahore mein and so many restaurants in Pakistan, all across Pakistan have our ovens now. उसके बाद we ventured into making American barbecue smokers. फिर हमने वो बनाने शुरू किए, home units भी for commercial use भी, similarly with the pizza ovens. फिर हमने barbecue grills शुरू की. We started, you know, fire pits, marshmallow roasting के लिए enjoy करते हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा और सर्दियों में आप वैसे भी enjoy करते हैं the heat of that fire pit and teppanyakis and then लोगों ने पूरे अपने outdoor kitchen बनवाने शुरू किए. So it was a very, you know, एक fluke था, एक ऐसे ही random idea था and लगता था कि हम नहीं कर सकते and मैं तो बिल्कुल believe नहीं करती थी but I think it was my husband's passion to create and then I think we just made a very good team for you know, for me to be able to test the products और R&D हमारी काफ़ी टीम की अच्छी थी and eventually we're exporting to many parts of the world like the entire UAE, Saudi Arabia, Germany and also USA at the moment and inshallah we hope to expand. We were also a part of, you know, we have been a part of Gulf food manufacturing for the past couple of years and I think last year in Gulf food manufacturing, we were the only manufacturers from Pakistan who were also their tabletop sponsors. So I initially got into this field because my father always enjoyed the best kind of food. उनको बहुत ज़्यादा शौक था और खाने का भी और खिलाने का भी. And my mother loved cooking and loved learning new things. तो मेरे लिए वो बचपन से एक breeding ground था to learn from her before there was any cookery school, before the time I could even go to school myself. तब से मुझे याद है I was I think 4 years old when she made me bake my first cake and back in the days I mean इतनी पुरानी बात है ये कि तब ना इस तरह से टीवी चैनल्स होते थे ना यूट्यूब होता था ना इंटरनेट होता था जहाँ से आप रेसिपीज़ लेके आप बना सको. सो आई थिंक मेरे लिए दिस होल things started right at home and the learning just, you know, it because everybody enjoyed it and I belong to a Kashmiri family जिसमें main focus ही ज़िंदगी का खाना और खिलाना होता है. So you know, I just feel like उसकी वजह से बहुत ज़्यादा I got a lot of opportunities because you know, एक वो enjoyment होती थी उस topic के around. And now that I feel like if I have to advise anyone, I would definitely say कि अब जो opportunities available हैं compared to the time when I was growing up, they are massive. You know, I have a name because of social media. And I know that there are so many people out there who are doing amazing work, जो work from home कर रहे हैं, वो घर से इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि you know, and they do follow good protocols, they follow proper hygiene protocols, they're doing great delivery services. So I feel like you know, इस field में there's so much that you can do as females, as women, as men. There's no limit to कि कौन सा जेंडर काम करेगा
या कौन से जेंडर को कितनी अच्छी जॉब मिलेगी या क्या बिजनेस करेगा. आई स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट something that I was enjoying. I got into learning, then I got into teaching, and then I got into eventually making a business out of it, right? So there's just too much that the industry has to offer because we aren't a developed country. और सबसे बड़ी aspect जो होती है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की होती है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि एवेन्यूज़ बहुत कम एक्सप्लोर किए होते हैं लोगों ने. सो आई फील लाइक विद द एक्सपोजर ऑफ द इंटरनेट, सोशल मीडिया, आई थिंक there are so many things that now you can do that you could not do 10 years back or 20 years back. And I think अब learning opportunities भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. And it's a very respectful career, respectful job. And I can see that more and more people who are very well educated, who belong to very good families, humble families, all kinds of people are coming into this, and it's just, it feels like a great community. And I love that everybody supports each other in this as well. So there's competition, but there's also a lot of support.